request. Hey, Chawda ji, आप है क्या? Come on the video. Chawda ji. हाँ मैं यहीं पे हूँ. Just a moment, एक फोन आया था तो मैं. अच्छा, now I would like to introduce. थोड़ा देखिए. I'm on the video only. जी ज्वाइन कर रहे हैं थोड़ा उसको. एक फोन आ गया था, so I was getting offline a little bit. Chawda ji. हाँ बोलिए. There is a committee like na you can meet. You have met Shivam. This thing and all. Today ours right now it's a 3-member committee. Okay. That is myself, yourself, and Shivam. Shivam, okay. You can see Shivam logged in. Shivam, you can see Chawda ji. Chawda ji is a leading advocate based in near Ahmedabad. Sanand, na? You are from Sanand? Yeah. He's a leading advocate, leading activist, very dynamic man, and based in Gujarat. And Shivam also is, I think, Gujarati, Jain, this thing. So what happened is, now we three will arrive at the question, and one of you will moderate. This is, let us work out the modalities later on an individual basis. We will have a private conference, how to go about it and all. And in that conference, I plan to include Pooja also and also Anjani Kumar if possible. Right now, it's a 3-member committee. Now, Pooja, you understood Praveen Patel's this thing? You can see whether they are logged in. So they haven't logged in yet, but just a few doubts. So basically the question which is coming from the end of 3 people, could their names be repeated if possible? Because it's not clear completely. Hey, Shivam, have you transferred the question raised by Praveen Patel to Pooja? Can you, why not you forward it? Praveen Patel has raised 3 questions. Huh? I think Praveen Patel, you have marked the copy to Shivam also. No? Yeah. He knows. So when did you send it? 2 days. Email before 2 days. I think maybe yesterday. So the 3 matters in that Word file, no? Yeah. Those are with Email was shared, I think. Okay, so yeah, the Word files. Okay. Yeah, the 3 lists are there. And second thing, we can make a group of the core committee also, so directly we can be in contact with each other. Yeah. Because getting the email, sometimes what happens in case of Gmail, nobody can understand that which is the first mail and which is second one. So WhatsApp, I think, for the core committee will be a better idea. So you 3 decide what modalities you like. Sir, I'll create the group. Yeah, please. Good. Praveen sir, can you please make Pooja, Anas and Mansi the co-hosts? Because sometimes participants unmute themselves in between and they would require that access. Because I will have to go off for a few minutes because I'm using my mobile also now, computer. The camera is creating problem. This is the first time in last 4 years this has happened. It's okay, sir. If you can get it done in the next few minutes, that's fine. Because that will smoothen the process of the webinar. Because participants, if they unmute themselves, it causes disturbance. So right now, Pooja is there in command. No problem. Hello. Yeah, Pooja will have to be made the co-host, Anas and Mansi also. Okay, so I will just going off for a few minutes. Yes, sir. And get the things done and make the Pooja, Mansi and Anas. Dorajiwala. Yeah. Okay. I'm going off now. You just check the 3 persons. We know you can announce whether they are there or not. They must be there. Will be back, yeah. Praveen. Yeah. Will be back soon, yeah. Yeah, but I am facing technical problem. But now also you are clear, yeah. It's okay. Yeah. True, but I am using mobile and computer both together. Yeah, I saw both the things, but you are quite. So just a minute. Let me make the things as desired by Shivam ji. Without you, nothing moves here. Don't. अरे बाबा ऐसा क्यों बोलते हैं? ये कोई मोदी का राज थोड़ी है. अरे कभी-कभी तो सच बोलो ना. Wrong number क्यों लगा रहे हैं? अच्छा. Anyway. So, how many people are logged in? Not bad, 28. Acha, Anjani Kumar. Acha, Chawda ji, I think yourself, myself, Shivam and Praveen Patel. And let's have a separate webinar. Okay. Yeah. So let's have a separate inflow webinar. So we can give a fine tune the whole thing. So the whole thing goes like now, for example, I should have a visual picture of what it will be next Saturday, because that is the way
as a management man, I used to do that. I can imagine the entire board meeting in visual, how it is supposed to be, how it should end. So we have to do a homework and we have to delegate properly. Okay, hello. let us delegate to the grassroots level. टेक्निकल प्रॉब्लम था जब So what will कैमरा happen is चालू था बंद था and the question has to be framed properly. So when individual raise the question, I have seen that they go for half an hour only, they keep on repeating. So you and Shivam being the lawyer, practicing law, you can condense the question into a simple language. Anjani Kumar is easy for him to reply to the point. हमने बात करी लो Any audience in the world, आपकी आवाज बहुत धुंधली आ रही है. Hardly we can hear you. there are a lot of शिवम जी से पूजा को होस्ट बनाई दो बाकी प्रवीण भाई बे कोने कोने को होस्ट बनाओ पूछ ही लो प्रवीण भाई का माइक्रोफोन चालू है, आपका वॉइस बहुत ब्लर हो जाता है. किसी आंदो नहीं है. yeah, yeah. Hardly we can hear you. Yeah. So what you'll do is you both have to cut short the question, condense the question, then we will forward it to Anjani Kumar. So he can come well prepared. So what will happen is normally he has to think, normally I have seen, you must have seen him, whatever, whenever he takes a note, then looking at the notes, he answers. So it's better to forward the question in advance. So mentally it's prepared, Yes. what is the type. So here, so what happen is, once we send him the question in advance, instead of ending up answering 10 questions, he will end up answering 20 questions. So 20 participants will be benefited. My idea is to reach out to the maximum. So when Just a minute, yeah. Yes, interrupting. Yeah. Hidayat is making coming into to make the puja host and other two names co-host. Yeah. I already asked him to come into and join you and do the things necessary. Okay. In future, Shivam, I will also give you Hidayat's number also. Anything, Okay. He is based in Palanpur. He is also a young boy like you, young boy. This thing. Hidayat, he also must be around 30s only. Thank you, sir. Where are you, Hidayat? Mission Gramsabha name है ना sir? Mission Gramsabha. He is a very dynamic person. Very young, very dynamic, very intelligent. Thank you. पूजा मैम आपको मैंने होस्ट बना दिया है. आप चेहरा तो दिखाओ. होस्ट बना दीजिएगा. Hidayat, जी सर. तेरा चेहरा तो दिखाओ. Like let others see. Yeah, he is Hidayat. Yeah, Pooja, Shivam, and volunteer Anas. They're all there. चावड़ा जी तो आप जानते ही हैं. हाँ, हम तो मिले ही है पालनपुर में. पालनपुर में मिले. जी. हाँ. अच्छा. तो हिदायत अभी हम लोग का कोर कमेटी का मीटिंग है ना, कल परसों मंडे ट्यूसडे करेगा, तभी लॉग इन फॉर अस. यू बी द थिंग. ओके. श्योर सर. हाँ श्योर सर. तेरा भी लीगल नॉलेज है क्या हिदायत? नहीं सर, बहुत कम है. ठीक है, अभी ये सेशन में सीख जाएगा. जी सर. अच्छा, now Anjani Kumar. अच्छा, now first question, are you ready with Pooja? Or take up your question and take it the other thing. Now be comfortable. You have to. These are the three questions. Yeah. Okay, whatever way it is. Achha, now the concerned person, Praveen, have they logged in who has raised the question? That I cannot see because everything is blank from. अच्छा, आपको खुद दिखता नहीं है. You can make an announcement. अच्छा, now Praveen ji, the person. अच्छा, now one rule. You can make an announcement. Vinod Kupchandani. अच्छा. He is from Gandhidham. Vinod Kupchandani, आप आए क्या? If you are logged in chat box में. अच्छा, also use the chat box. Yeah. हाँ. कौन आया? Chat box. Announce the three names. Let them because. अच्छा, दूसरा सवाल किसने किया? अच्छा, प्रवीण जी, the person who raised the question, if he is absent, we are not going to take him. Naturally. Okay, because. But they must be there. Yeah, he has they to. Telephoned me that we will join before 10 minutes. Anyway, I have pleasure in welcoming Anjani Kumar ji. He has just logged in. Anjani Kumar ji, namaskar. I would like to. आपका mic muted है. Sorry, sir. Yeah. Good evening to all. Good evening to all. Now, Anjani Kumar ji, right now in the committee, what we have done is we have formed a small committee. My objective is your time should be maximum utilized.
So 4 people benefit. My idea is, and let us cut out all the other formalities. So maximum number of people are benefited. So what I plan to do is getting a committee and of almost from all over India, from north, east, west, south. So we get cross-section of question across the country. Very true. Now, the idea is initially, and I wish to take, before announcing the committee, I want to know their capacity and capability, because once I've taken them in the committee, getting rid of them is a difficult, embarrassing. So right now, I have taken 2 talented persons. One is Shivam, whom we already know from PCGT. He is also a professor of Government Law College. He is a young entrepreneur, lawyer, hardly less than 30 years old. And Dr. Chavda, whom you have already met in Palanpur, is there. Yeah. He is a leading advocate from Ahmedabad. Very Okay. Now, Very right now, what we do is, what our plan of action is, we are inviting questions from all, and they should forward it to the committee. Okay. Now, the questions, if they raise in the webinar, they may go on and on for 20 minutes raising the question. So these 2 advocates will condense a question in a legal language and will forward to you a day or 2 in advance. Very good. What happen is you need not note down notes, take down notes. So the question will be forwarded to you a day or 2 in advance, so that now your job also gets this thing easy, and plus also you can be ready with the right section and quoting the right relevant section. Other thing, it also becomes this thing. So your answer now. So what will happen is you are ready. Like what the moderator, what we have decided is, I believe in training the youth. So I am going to invite each webinar a different youth leader to be the moderator. And they are also law students. They are also law students. So basically, with your senior counsel being present here, they also get to learn how to conduct a meeting, how to moderate a meeting, and plus also legal things. And so what will happen is these questions, and if the participants who have raised the question, only if they are present in the webinar, we are going to take it up. Other, we are not going to take it up. Very good. Okay, so now the today's thing, you have already answered Pooja Naik's answer in the last webinar. Today she is going to moderate the session. Okay, Very good. Pooja Naik is here with us, and she will be moderating. Next webinar will be different. So I am going in the background. I am going to promote like all these youngsters. Now Pooja Naik will be inviting the person who has raised the question, and if he is not there, we move on to the next question. And the question, that questioner already the synopsis, if he has told us in half an hour, a synopsis is made of in 2 minutes of the entire question in a legal language. Only that synopsis will be raised by the questioner directly to you. Now, if you are not clear about that, you can ask the thing, like the interaction can happen. So my objective, Anjali Kumar ji, is 90 minutes of our time. Even if you take 10 minutes per question, at least 9 people should be satisfied. If your answer is 5 minutes, at least 18 people can be satisfied. So it has to reach out to the maximum, because your time is more valuable than anything. I want to utilize every minute of yours. Yes, sir. I hope you are in concurrence. Thank you, sir. Thank you, sir. The liberty of doing. So now, with this, I leave the floor open to Pooja. Let us commence the thing. And by welcoming Anjani Kumar and Dr. Chavda also, you can see that he is an advocate, leading advocate. And the committee members, we will interact with you later on. Okay. Now, today's webinar, I throw floor open to Pooja. Pooja, you are the boss. Go on. Now, please mute all the others. Please mute your mic, including myself. Thank you so much, sir. So I, Pooja Nayak, one of the student coordinators, deem it a great honor to welcome each and every one of you to the Virtual Legal Advice and Consultation Center session, which is being jointly organized by National Federation of Societies for Fast Justice and Public Concern for Governance Trust, with an aim to provide free legal aid and advice to citizens in need. This goal would not have been achieved without the dedication and significant contribution of our esteemed speaker, Shri Anjani Kumar Singh sir. Sir is an advocate practicing at the Honorable High Court of Bombay, as well as the Honorable Supreme Court of India. Sir has pursued his BCom LLB from the prestigious Banaras Hindu University. He has 25 years of wide experience in litigation
in various facets of law, such as civil, criminal, arbitration, economic offense, trials of the Central Bureau of Investigation, etc. He has appeared before various courts and tribunals in a variety of matters, including several high-profile ones. Sir has also assisted and appeared with late Sri Ram Jethmalani sir for various matters. He has acquired a reputation for his skills and outstanding as well as versatile advocacy over the years. He is an ardent supporter of various social organizations and other institutions. Sir was instrumental in starting free legal aid centers in law colleges in Mumbai. He has fought 2 PIL cases of National Federation of Societies for Fast Justice, Dahanu, and has won both. He is a public-spirited person who is ready to serve as a pro bono advocate on issues of public interest for the disadvantaged ones. Sir has given the free legal advice to the poor and needy through various mediums. One such initiative that Sir has willingly been a part of is this virtual legal advice and consultation center. We are extremely grateful and honored to have you with us on this platform today, sir. I humbly request you to carry the session forward and enlighten us with your valuable insights. Thank you so much. Thank you, Pooja. And thank you all. Today, I have some sore throat. So please bear with me. Since yesterday, but I'm in a position to speak. So that is not an issue, only because my original voice would not be there. So probably you all will feel that why I'm talking like this. See, I believe instead of going into any other formalities, I believe that the way Mr. Venkat has said already, that we should consume our time as much as possible because we are using the online medium and lots of people may be there. I'm finding about 40 people are there participating in this virtual legal center. So I believe if we can commence with the question, then I'll be in a position to understand and I'll be answering the same. And definitely, please let me know if people are understanding Hindi or English, or even people can tell the questions in Marathi also. I'm not that good in Marathi, but yes, I can answer in Hindi. Sir, one thing I can understand, like you are not well today. No, I'm fine. I'm fine. Now, if you like, we don't mind cut shorting. Like we can make it for 45 minutes for today, and maybe next week we can continue. So because your health is more important, because I can. My health is fine, sir. It's a small. No, because we can see that. Now we can feel it. Your voice, severe sore throat and all. So as and when you are uncomfortable, tell us, sir, because there is nothing hard and fast. We haven't informed any of the participants. Today we are going to take up the question. So we are not informing. So as and when, like maybe today, Pooja, we can make it to 1 hour session, if it is okay. Yes. Yeah, yes. I think that we should know, because I can hear, sitting here, I can see visually, I can see he's uncomfortable, but still he has been kind enough, good enough. हेलो सर, मैं परिवर्तन मोड़ से बोल रहे हैं, सारण छबरा बिहार. Yeah. So Pooja, you can take up the first question. Yes, sure. Yeah. So I invite Mr. Vinod Kupchandani sir to please pose his question. Mr. Vinod Kupchandani. मेरी आवाज आ रही है? बोलिए. सर, मैं गुजरात कच्छ से हूँ, कच्छ जिले से, और प्रवीण भाई को मैंने यहाँ का जो इश्यू है वो भी बताया, यानी अभी मुझे सिर्फ इंट्रो करना है या जो मैटर है वो भी बतानी है? आप सर सीधे मुद्दे पे आइए, आपका इश्यू बताइए सर. अच्छा सर, इश्यू ये है, यहाँ पर एक संस्था है, उनके द्वारा स्कूल चालू हुई थी डीएवी नाम से, तो लेकिन वहां पर सिक्योरिटी के कोई भी मापदंड बराबर नहीं थे, जैसे विंडोज और कुछ नहीं थी. तो हमने उसकी इंक्वायरी के लिए जब आरटीआई लगी तब पता चला उसको सीबीएसई है ही नहीं. तो उसके बाद जैसे जैसे आरटीआई करते गए पता चला उसमें बहुत कुछ इरेगुलरिटीज थी और बच्चों पर भी बहुत परेशानी उनकी वो कर रहे थे, तो उनके रिपोर्ट्स भी बन गए. उसके बाद फाइट करने के बाद जब उनकी मान्यता चली गई, उनका रिकॉग्निशन, तो उन्होंने हमको, जैसे मैं कंप्लेनेंट था मेन, तो हमें मीटिंग के बहाने बुलाकर मारकर निकाल दिया.
फिर उनकी दूसरी संस्था से भी हमने जब इंक्वायरी की तो उनका एक ऑर्फेन हाउस है जो भूकंप के बाद बना कच्छ में, उसमें 34 चिल्ड्रन ऑन रिकॉर्ड अवेलेबल थे लेकिन वहां पर नहीं थे, यानी ऑन रिकॉर्ड वो मिस थे। बहुत हल्ला हुआ और हमने कंप्लेन भी की, एनएचआरसी में भी मैं गया, पिटीशन दायर की, एनएचआरसी ने ऑर्डर दिया, फिर भी एफआईआर नहीं हुई। एनएचआरसी को पुलिस ने ऐसा बताया कि बच्चे मिल गए, माँ बाप के साथ थे। एनएचआरसी ने बोला इतने महीने तक नहीं थे, उसमें 11 तो बच्ची थी, कुछ भी हो सकता था, आप एफआईआर करो, फिर भी नहीं किया। उसके बाद 2018 में गैंग रेप उसी संस्था में तो बच्चों ने एक दूसरी बच्ची पर किया, वो भी दबा दिया, तो वो भी हमने बाहर निकाला, पता चला तो एफआईआर हुई। लेकिन पोक्सो की सेक्शन 90, 20 और 21 का रिपोर्ट हुआ ट्रस्टियों के ऊपर, लेकिन उनके सामने कार्रवाई नहीं हुई। तो एनएचआरसी में भी उसके ऊपर मैंने फॉलोअप किया, लेकिन कुछ हुआ नहीं। अभी मेरी मैटर में मैं हाई कोर्ट में हूँ, फाइट कर रहा हूँ, लेकिन हाई कोर्ट में ये लोग इतने पावरफुल है, बड़े बड़े एडवोकेट रखे, मैंने 3-4 एडवोकेट चेंज किए। सिविल में तो मुझे निकाल दिया क्योंकि मेरे कोई मेरिट्स रिकॉर्ड पर लाए नहीं, क्रिमिनल चालू है, लेकिन 3 साल से मेरा एडवोकेट अपियर नहीं हुआ। इस बार 12 तारीख को मेरी डेट थी, तो मैं उसके ऑफिस पर बैठ गया, वो आया, लेकिन सिर्फ थोड़ा पक्ष रखा तो डेट दे दी वापस, यानी कोई कोर्ट में आने के लिए तैयार नहीं। ऐसे को टोटल 50 बच्चे जिसके मेरे पास नाम है। एक बात पूछूं आपसे? यस सर। आपकी एफआईआर जो आप क्वेश्चन के लिए गए हैं, उसमें चार्जशीट फाइल हो गई है क्या? नहीं, चार्जशीट नहीं हुई है, इसलिए नहीं हुई। क्या एफआईआर की तारीख क्या है? तारीख है मार्च 2017 की है। मार्च 2017 की तारीख है, करेक्ट? और अभी तक एफआईआर चार्जशीट नहीं हुई है, बराबर? हाँ, क्योंकि फर्दर इन्वेस्टिगेशन के एसआईटी बनाई है। ओके, फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए एसआईटी बनाई है। और एसआईटी जो बनाई है, एफआईआर आपके अगेंस्ट में किस किस सेक्शन में हुई है? नहीं, मेरे अगेंस्ट में नहीं, मैंने सामने वालों के अगेंस्ट में बनाई है। आप हाई कोर्ट में किस लिए गए? मैं हाई कोर्ट में एफआईआर के लिए गया। किसकी एफआईआर के लिए? स्कूल के सामने, भाई इलीगल स्कूल चालू थी। हाँ, तो हमें निकालने के बाद तो अच्छा, एफआईआर हुई। हाँ, आपने तो बोला भी एक पोक्सको का भी एफआईआर हुआ, इसके पहले वो उनकी सिस्टर जो ऑर्गेनाइजेशन उसमें हुआ। अच्छा, एक मिनट आप मेरे को बताइए, आप मेरे से कौन से मुद्दे पे सवाल पूछना चाहते हैं? जो गुजरात हाई कोर्ट में मैटर पेंडिंग है उसके बारे में, करेक्ट? हाँ, हाई कोर्ट के बारे में। हाँ, रुकिए। अब गुजरात हाई कोर्ट में जो मैटर पेंडिंग है, वो पिटीशन किसने फाइल किया है? पहले मैंने फाइल किया, रुकिए, तो वो लोग पोस्टिंग में आए। रुकिए। ओके। अब आपने पिटीशन जो फाइल किया, वो किस लिए फाइल किया? आपका प्रेयर क्या था? जो इलीगल स्कूल चल रहा था, तो उसके सामने एफआईआर जो 467, 420 वो सब सेक्शन के अंडर में आईपीसी में। हाँ, तो आपने इसलिए एफआईआर आप हाई कोर्ट में फाइल करने गए, पिटीशन फाइल की कि उनके खिलाफ 467 इन सब सेक्शन में एफआईआर दर्ज की जाए, बराबर? ये पिटीशन आपने कब फाइल किया, कौन से ईयर में? 2017 में। अब सुनिए, आप जनरल लॉ क्या है वो मैं बता देता हूं आपको, ठीक है? मेरी समझ से आपने जो भी पुलिस कंप्लेन लोकल पुलिस स्टेशन में, फिर डीसीपी को, ये सब कंप्लायंस आपने किया? हाँ। तो उसके बाद लोकल मजिस्ट्रेट के पास आपने प्राइवेट कंप्लेन फाइल किया था क्या? नहीं किया था। तो अभी लॉ इस पर ये है, लेकिन आपका केस थोड़ा सा एक्सेप्शनल दिखता है क्योंकि इसमें काफी केसेस मुझे दिख रहे हैं। और आपने, लेकिन आपको मेरी समझ से तो मजिस्ट्रेट कोर्ट में जाना चाहिए था, लेकिन अगर आप नहीं गए हैं, आपके पिटीशन में कोई भी सुनवाई हुई है आज तक अभी? हाँ, पहले ऑर्डर भी हुआ, एफआईआर का ऑर्डर एफआईआर का हाई कोर्ट में ऑर्डर हो गया है? हाँ, ऑर्डर हो गया। उसके बाद पुलिस ने कुछ सेक्शन निकाल दी और नाम भी निकाल दिए मुझे डरा के। सिर्फ 406, 465, 472 और 34 सेक्शन की एफआईआर की। तो उसके बाद मैं फिर से गया हाई कोर्ट। ओके। तो हाई कोर्ट ने ये भी गए, तो दोनों पिटीशन क्लब कर दी, उन लोगों को नो कर्फ्यू स्टेप दिया और मुझे रिलीफ में एसआईटी दी। और एसआईटी ने 1 साल के बाद 467, 420 और 120 भी इम्पोज कर दिया है कोर्ट में। तो फिर तो आपको रिलीफ मिल गया? नहीं, मेरे 3 मुद्दे और भी बाकी थे एसआईटी में, मेरे 3 रिलीफ और भी बाकी थे जो हम पर अटैक करके। 3 रिलीफ नहीं, देखिए आप अभी आपने एक नई फैक्ट बताई। आपने बताया कि उन्होंने लिमिटेड सेक्शन लगाया था जिसके अगेंस्ट में आप गए हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का ऑर्डर दिया, ऑर्डर दर्ज करने के बाद पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज की और लिमिटेड सेक्शन लगाया जिसके अगेंस्ट में आप फिर हाई कोर्ट में आए और हाई कोर्ट में पेंडिंग है और वो लोग भी हाई कोर्ट में उस एफआईआर की क्वेश्चन के लिए आए।
दोनों पिटीशन को क्लब कर दिया, बराबर, और दोनों पिटीशन को क्लब करने के बाद वो मैटर पेंडिंग है और आप बोल रहे हो कि अभी एफआईआर हो भी गई है। अब आपकी इच्छा ये है कि और भी जो 2-3 ग्रीवांसेस हैं उस पर भी हाई कोर्ट से कोई आपको रिलीफ मिले, और आप ये भी चाहते हो कि आपका मैटर हाई कोर्ट में पेंडिंग और आपके लॉयर अपीयर नहीं कर रहे हैं। आपका ग्रीवांस यही दिख रहा है मेरे को। मेरी समझ से इसके लिए आपका पिटीशन का मुझे प्रेयर भी सुनना पड़ेगा कि आपने पिटीशन में प्रेयर क्या क्या मांगा है। सर हमने 3 प्रेयर मांगा था। एक तो जो सेक्शन है वो पेंडिंग थी, दूसरा ये था कि जो उन्होंने नाम निकाल दिए थे एक्यूज के, और तीसरा ये था कि फीस की जो हमें नोटिस दी उससे पहले हम पर अटैक किया गया था, वो मेरी ओरिजिनल कंप्लेन में है, उस अटैक की भी जो कार्रवाई की जाए। तो उसके लिए तीन मुद्दों ये तीनों पॉइंट एक एफआईआर में नहीं आया क्या? इसके लिए आप 3 नहीं आया, नहीं उन्होंने नहीं किया। उसके बाद मेरी हियरिंग हुई, पुलिस ने, एसआईटी ने मेरा स्टेटमेंट लिया, लेकिन फिर पुलिस ने ऐसा बोला कि भाई जो है ना हम लिखाते वैसा लिखो, आप बोलोगे ऐसा नहीं लिखेंगे। यानी वो अपने हिसाब से थोड़ा वो लो लिख रहे थे। मैंने स्टेटमेंट दे दिया है, रिकॉर्ड करा दिया है, लेकिन वो एफआईआर ऑर्डर के बाद भी नहीं कर रहे हैं। देखिए मेरी समझ से आप बड़े एंथुसियास्टिक और बड़े एनर्जेटिक और बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। आप एक समाज का बड़ा काम कर रहे हैं। इवन आपको एक अच्छी सफलता भी मिली है और हाई कोर्ट से आपको एक अच्छा ऑर्डर भी मिला है। हमारी समझ से आपका जो भी ऑर्डर मिला है, आपके वकील ने ही ऑर्डर दिलवाया होगा आपको, तो अपने वकील पर आप भरोसा करिए। मुझे पूरा भरोसा है कि आपकी फिर से सुनवाई होगी और जो बाकी प्रेयर है वो भी मिलेंगे आपको। लेकिन मेरी समझ से अगर एक पिटीशन में आपने 3 इश्यू उठाया है, 3 प्रेयर डाला है, तो और एक एफआईआर अगर दर्ज करने का ऑर्डर हुआ है और आप बोलते हो पुलिस उसके हिसाब से नहीं कर रही है, तो आप एक एडिशनल एफिडेविट फाइल करो हाई कोर्ट में। एडिशनल एफिडेविट में जो मेरे को बता रहे हो आप, वो सारी चीजें उस रिकॉर्ड पे लाओ आप। एक अभी एडिशनल एफिडेविट फाइल, जो बातें आपने मेरे को बताई। लास्ट हियरिंग कब हुई थी आपकी हाई कोर्ट में? हियरिंग सर बस वो जब एफआईआर के दर्ज 2018-17 में, बस उसके बाद हियरिंग नहीं हुई। हियरिंग नहीं हुई, यानी डेट्स आई, एडवोकेट अपीयर नहीं हो रहे। कोई बात नहीं, आप एक काम करो, 2017 के बाद ये जितनी घटनाएं हुई, कोर्ट का, हाई कोर्ट का ऑर्डर आया, एफआईआर दर्ज करने के लिए ऑर्डर आया, पुलिस ने आपको, एसआईटी ने आपको बुलाया भी, आपसे एफआईआर लिखने को भी बोला, और वो बोलते हैं कि वो अपने हिसाब से लिखना चाहते हैं एफआईआर। आप बोल रहे हो कि आपके हिसाब से, वो आपके स्टेटमेंट के हिसाब से नहीं लिखे, जो कि मेरे को डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि हाई कोर्ट से ऑर्डर जाने के बाद कोई पुलिस वाला ऐसा काम करता नहीं है। मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ। या वो इतने इन्फ्लुएंशियल लोग हों कि शायद वो ऐसा कर पा रहे हो तो अलग बात है, क्योंकि हाई कोर्ट का ऑर्डर जब जाता है ना, तो कोई भी ब्यूरोक्रेट या कोई भी पुलिस वाला इतना रिस्क नहीं लेता है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तो आपका जो भी कंप्लेंट आपने हाई कोर्ट में लिखा, जिसके बेसिस पर आपको ऑर्डर मिला, तो अगर आपका स्टेटमेंट पुलिस नहीं ले रही है, देन इफ यू फील, आपको लगता है कि ये सारी बातें हैं, तो एक एडिशनल एफिडेविट बनाइए। उसमें सारी बातें जो मेरे को बता रहे हैं, 17 के बाद कैसे एसआईटी ने आपके साथ बिहेव किया, कौन सा ऑफिसर था, उसने आपसे क्या स्टेटमेंट लिखने को बोला, आपने उसको क्या लिखने को बोला, आपके हिसाब से भी 2 ग्रीवांसेस कंप्लीट नहीं हुए जबकि एक ही एफआईआर में होना था। ये सारी एडिशनल एफिडेविट लेके फाइल करिए हाई कोर्ट में, फिर एक अर्जेंट एप्लीकेशन लगाइए कि कुछ भी नहीं हो रहा है, तो आपकी चूंकि फ्रेश एफिडेविट रहेगी, तो उसके बेसिस पे आपकी अर्जेंट सुनवाई हो जानी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो कोशिश वही कर रहा है, एडवोकेट वो भी नहीं कर रहा। एडवोकेट को मैंने वो बोला, वो भी नहीं कर रहा। देखिए एडवोकेट का जो ग्रीवांस है ना, उसके लिए तो ये 2 ही सोल्यूशन है। आप अपने एडवोकेट को बदल लीजिए। 3 बदले सर, 3-4 इसमें। अब देखिए हम लोग क्योंकि एग्जैक्टली सामने वाले बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है। आपने एफिडेविट फाइल किया क्या एडिशनल? अभी तक कोई एडिशनल एफिडेविट फाइल किया क्या? नहीं, एक रिप्लाई फाइल किया था, उसके बाद एडिशनल अभी कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं आजकल अगर पिटीशन आपका है तो रिप्लाई आप क्यों फाइल करेंगे? उनके पिटीशन में आपने रिप्लाई फाइल किया क्या? सर क्लब हुआ ना, फिर उन्होंने हमको रिस्पोंडेंट बनाया था, उन्होंने हमको रिस्पोंडेंट बनाया। उनके पिटीशन में आपने रिप्लाई फाइल किया। आप एक अपना एडिशनल एफिडेविट फाइल कीजिए, आप उसको अच्छे से डिटेल में बना के करिए, और उसी के बेसिस पे सर्कुलेशन या जो भी मेंशनिंग या जो भी अर्जेंट हियरिंग, जो भी कर लीजिए, 3-4 ये हम लोग वर्ड यूज करते हैं, मेंशनिंग, अर्जेंट हियरिंग, जो भी वहाँ का प्रैक्टिस और प्रोसीजर है गुजरात हाई कोर्ट का, अपने वकील को बोलिए कि अर्जेंट हियरिंग करें। आपको लगता है कि आपके वकील फिर डिली डैलिंग कर रहे हैं या आपको कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, देन माय एडवाइस वुड बी चेंज योर लॉयर। ओके सर, चेंज तो किया है सर।
अब फिर चेंज करो, और नहीं चेंज करो तो फिर आप इन लोगों से मिलो, अपने प्रवीण भाई से, और इन लोगों से मिलो। आप फिर भी कोई वकील आपको दे देंगे वहां पे। अगर कोई वकील मिल जाता है रिकॉर्ड पे तो फिर देखेंगे, वी कैन हेल्प यू फर्दर इफ रिक्वायर्ड। आप प्रवीण भाई करो, वी कैन हेल्प यू फर्दर। लेकिन पहले आप अपना एफिडेविट तो फाइल करो, आप एडिशनल एक कोशिश तो करो आप। बिल्कुल सर, चालू। बट यू हैव डन अ वेरी गुड जॉब। आई मस्ट अप्रिशिएट दैट सच पीपल आर रिक्वायर्ड इन सोसाइटी, जो कि गलत को गलत के लिए इतनी लंबी लड़ाई लड़ते हैं और अपने को रिस्क लेते हैं। आई रियली अप्रिशिएट यू फॉर दैट। थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। Thank you so much. Now we invite Bandana Topoji to kindly ask the question. Bandana Topoji. Bandana Topoji, are you there? Bandana ji, are you there? Okay, move on to the next. I think he's on mute. He's trying to speak from the Samsung username. Oh, no. Bandana ji is not there. Okay, move on. Pooja, move on to the next question. Yes. सर मैं हिंदी से बोल रहे हैं मैडम। नहीं, अभी पहला ही सवाल आना चाहिए तो हम लोग वो हिसाब से ले रहे हैं। अभी आगे से आपको सवाल लेना, आप फेडरेशन को ईमेल में भेज दीजिए, देन वो हिसाब से हम लेंगे। अच्छा, यस ऑलरेडी सेंड्स। या वो लास्ट में समय है तो आपका ले लूंगा, ठीक है? नहीं, बंदना जी ले लीजिए, उनको सवाल भेजा हुआ है। अच्छा, इनका सवाल है क्या? ले लूं? अच्छा ठीक है, बोलिए। बोलिए बंदना टोपर। हाँ सर, मेरा बेटा को भुवनेश्वर में मर्डर हो गया। मैं वहां जाके इंफोसिस थाना में एफआईआर दिए। मेरा एफआईआर आईआईसी बिल्कुल लिया नहीं और मेरे को झूठ बोलने लगा, आपका एफआईआर हो गया, आपको एफआईआर देने की जरूरत नहीं है, आप डेड बॉडी ले जाइए, ये सब मेरे को बोलने लगा। उसके बाद मैं बहुत जिद किए कि एफआईआर देने के लिए, वो भी मेरा बात माना नहीं, मेरे को झूठे ही बोला, जाइए आपको एफआईआर हो गया है, एफआईआर कॉपी हम लोग भेज देंगे, ले जाइए डेड बॉडी। उसके बाद डेड बॉडी हम बहुत मुश्किल से ले आए। ले आने के बाद दफनाने के बाद फिर मैं गए, लिख के दिए, वो हमारा लिखा हुआ वो रखा कि नहीं रखा कि फेंक दिया, कहा मेरे को पता नहीं है। फिर जाके हम 5-6 महीने के बाद बार बार कॉल करते थे, फिर भी उन लोग सुने ही नहीं देता था, सुनता ही नहीं था। कि वो बोलते थे कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने दीजिए, वीसीआर रिपोर्ट आने दीजिए, यही बोल बोल के मेरे को झूठ बोलते ले गया 6-7 महीना। उसके बाद मैं प्रवीण पटेल सर से मैं बात किए, बात करने के बाद वो एडवोकेट दिए, एडवोकेट देने के बाद मैं जाके हाईकोर्ट में अपील किए मेरा एफआईआर के लिए, आप हाईकोर्ट जस्टिस एसके पाणिग्राही को, और वो मेरा केस को एक्सेप्ट किया और 1 साल के लिए आईआईसी को फील्ड ड्यूटी मना कर दिया। फिर भी वो और 3 महीना टाइम दिया, 3 महीना में इंक्वायरी करके रिपोर्ट दाखिल कीजिए हाईकोर्ट में बोल के आदेश किए। उसमें से आईआईसी समिता मिश्रो अगवा होके आगे ही रिपोर्ट, वीरेंद्र लकड़ा जो कि ओलंपियन, उसको बचाने के लिए, मेरा केस को दबाने के लिए, मेरा बेटा का मर्डर का जितना भी प्रमाण था सबको नष्ट करने के लिए, वो सबको खत्म करने के लिए वो आईआईसी समिता मिश्रो पूरा क्लब कर दिया। इसलिए अभी जो 3 महीना के अंदर में जो इंक्वायरी दिया है, वो इंक्वायरी वही वीरेंद्र लकड़ा के ही फॉर्म में दिया है। समिता मिश्रो 15 दिन का पहले ही वो रिपोर्ट दाखिल किया है। तो समिता मिश्रो 1 साल वो सस्पेंड किया गया है, उसमें से भी क्यों वो, उसको कौन पावर दिया जो जाके वो हाईकोर्ट में, लोअर कोर्ट में जाके रिपोर्ट को दाखिल किया गया है। तो इसीलिए मैं आप लोग से जोड़ने चाहते हैं कि मेरा कुछ हेल्प कीजिए। मैं एक गरीब आदिवासी आदमी हूँ और मेरा बेटा का न्याय मिले, इसीलिए मैं पटेल सर से बात किए और मैं आप लोग से
इस ये में जुड़े हुए हैं और आप लोग को मैं अपील कर रहे हैं और निवेदन कर रहे हैं और मेरा जिसे भी केस। हाँ सर। टोपो जी अब मैं बोलूं? बोलिए सर। टोपो जी मैं बोलता हूं, आप 2 मिनट मुझे ध्यान से सुनिए। Patel साहब, can I talk to you? Patel साहब, you are there? Yes sir, I am here. पटेल साहब, इनका तो नोट्स भी आपने मुझे भेजा है। Yes sir. और इनका नोट्स मैंने देखा है और Yes, इनका जो मैंने सुना है, it's a very gruesome killing kind of thing, and it's it's prima facie. If I believe he's saying a truth, then prima facie it's a gruesome murder, a kind of thing. And I'm informed by him that you have given some advocate also in respect to him. So, and your advocate has filed a petition, and 3 months inquiry order is also passed by the Honorable High Court. And that inquiry order is also inquiry is also manipulated. What he's alleging by some officer, and that officer is also suspended for few months. I believe this is the case where really we should help him, because somebody is dead now and nothing is happening. Here, my advice would be, आपके जो वकील साहब हैं, उनको भी कभी एक बार लाइन पे लेंगे क्या? कभी तो उनसे पूछिए। Next week मैं कोशिश करूंगा। So next week we will try. Because why I'm saying this matter, we should give a complete support, at least to the level of advice and the local advocate you have already given. तो मैं उनको जरा कुछ चीजें पूछूंगा। इनसे मैं क्या पूछूं? ये तो गरीब भी है और ये पढ़े, इनकी शिक्षा भी वैसी नहीं है, शिक्षा दीक्षा, और वो मेरे कई सवाल का जवाब भी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आपने एक वकील दिया है। तो वकील अगर मेरे सामने आएंगे तो आई कैन अंडरस्टैंड द फैक्ट, व्हेन सर्टेन थिंग्स आर इन माय माइंड, मेरे दिमाग में कुछ चीजें आ गई हैं, बट आई जस्ट वांटेड टू वेरीफाई सर्टेन फैक्ट्स। वो एक बार मैं इंटरप्ट करूं सर? बोलिए ना, बोलिए। तो आई विल टेक ओनली 2-3 मिनट। इसमें 2-3 चीजें बहुत जरूरी है जो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन में नहीं ली है। नंबर 1, इनके लड़के की जो शादी हुई, शादी के बाद वो उनकी जो वाइफ थी, लड़के की वाइफ, वो पोस्टिंग थी उनकी झारसुगुड़ा के पास, जो इनके राउरकेला घर से करीब करीब 140 किलोमीटर दूर होगा। अपनी कार से उन लोग गए, लड़का जो है खुद ड्राइव करके ले गया, उनकी वाइफ साथ में जो नई जो शादी हुई थी, और उसके साथ 2 लड़के नए उनके दोस्त वो भी साथ में गए, जो जाने का नहीं था। लास्ट मिनट में वो लोग आए और बोले चलो हम भी साथ में चलते हैं। राउरकेला से झारसुगुड़ा जाकर ये लड़के को वापस आना था। वापस आने की बजाय ये 2 लड़के उसको बोलते चलो हम लोग भुवनेश्वर चलते हैं। तो वाइफ को घर छोड़ के ये लोग दोनों रात को ही भुवनेश्वर निकल गए। अर्ली मॉर्निंग भुवनेश्वर पहुंचे। जिस हॉस्टल में पहुंचे वहां पर वो जो लड़की थी दूसरी, उस कमरे में गए, वहां पे बीरेन लाकरा जो इंडियन ओलंपियन है हॉकी का, और उसको शायद कैप्टन भी बनाने वाले थे, मगर इस केस के कारण उसको अभी रोका गया है कैप्टन से। ही इज डेजिग्नेटेड एज डीएसपी इन पुलिस। सरकार ने उसको डीएसपी का रैंक दिया है। उस आदमी ने, मतलब उस बीरेन लाकरा की बात कर रहा हूँ, ही वाज देयर इन द रूम विद दैट गर्ल। और उसके बाद बीरेन बाहर आया और बोलता मेरे को पता नहीं क्या है, और बीरेन ने सुसाइड किया, वो अपने आप को हैंग कर लिया है। अब ये हमने इनको कहा, पुलिस को भी कहा, इनके लड़के वकील को भी कहा कि आप कोर्ट को ये बताइए कि भाई ये 2 लड़के जो गए हैं उनके कॉल डिटेल्स निकालिए। उनकी बीरेन से बात हुई होगी, जो प्रोग्राम इनका था राउरकेला से झारसुगुड़ा जाके वापस आना, ये 2 लड़के नहीं थे कहीं पिक्चर में। वो लास्ट मिनट में एंट्री कैसे हुई, कैसे झारसुगुड़ा से भुवनेश्वर गए और भुवनेश्वर में जाके उस लड़के की डेथ कर दी है। सुसाइड करना होता तो वो भुवनेश्वर जाता ही क्यों? वो झारसुगुड़ा में करता, राउरकेला में करता, कहीं पे भी करता। इतना दूर ट्रैवल करके वहां सुसाइड करने जाएगा क्या? पुलिस हैज नॉट डन एनीथिंग ऑन दिस। ये पूरी इंक्वायरी के लिए पुलिस ने गायब की है। इवन कॉल रिकॉर्ड निकालने की बात कर रहे हैं तो पुलिस उसको भी नहीं सुनती है। और जो फर्स्ट इन्होंने जो कहा, गलती एक जगह जो नहीं कहा, वो बात पुलिस एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं किए टिल द हाई कोर्ट ऑर्डर देम। उसमें करीब 4-5 महीना लग गया इनको। हाई कोर्ट ने जब कहा तब जाके एफआईआर रजिस्टर्ड हुआ। तो पुलिस जो है वो डीएसपी को बचाने का काम करती है। पूरा एविडेंस डिस्ट्रॉय हो गया होगा। बहुत सारा चीज है। लोग ने पूरा डीएसपी जो था बीरेन लाकरा डेजिग्नेटेड, उसको बचाने के लिए ही पूरा काम किया है, ऐसा मेरा लगता है। थैंक यू सर, सॉरी इंटरप्शन। मेरा इसमें यही ओपिनियन है कि देखिए
I am finding the note sent by you. You people have made a prayer in Orissa High Court, either for police inquiry or CBI inquiry, right? तो आपको पुलिस इंक्वायरी 3 महीने का आपको ऑर्डर मिल गया, करेक्ट? अभी अगर ये सारी बातें जो सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट्स हैं, अगर इसको हम लोग हाई कोर्ट में फिर से बताते हैं कि हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी ये सारी घटनाएं हो रही हैं, तो in all probability high court will appoint CBI inquiry. CBI is altogether a different agency. CBI की एजेंसी आती है तो they have their own mechanism of making investigation and everything. So in all probability we will be in a better hand. तो इसके लिए मैं चाह रहा था कि आपके लॉयर से बात करूं. I wanted to understand from him कि what prayer he has made. इनका पिटीशन जो बना हुआ है वो मेरे से शेयर करिए जरा. I just wanted to do that. And I wanted to really to help him that at least nothing, then we can at least provide them, we can help them to get a CBI inquiry. Because the state police cannot do. A man who is a DSP in a state, got the rank, he's a very famous person, he's a celebrity, he's a hockey player, was to be a captain of the hockey team of India. How come investigation would be fair? CBI should be there. Yes. CBI must be there, I believe. So I have to see the copy of the petition. Then I'll suggest how another additional affidavit is required to be prepared by him. And accordingly, you directly pray and argue for CBI inquiry directly. Forget about all inquiry because it is impossible to get the fair investigation. Yes, sir. We will do, sir. Whatever you have suggested, we will do that. Okay. Okay. Yes, thank you, sir. Praveen Patel, I think it's a very serious issue and he is a poor man. I think now immediately take the matter and start forwarding to Anjani Kumar. Let us not wait for the next webinar or something. We will do that within 3 days, sir. Direct approach because it's a very, very touching issue. Let me also talk to the advocate who is appearing in Odisha. That advocate and all immediately make direct contact. We will do the needful, sir. Please do the needful. Thank you so much. Yes, sir. Yes, sir. Pooja. Hello. Yeah. Thank you so much. Now we invite Dilharan Sathi ji. जी नमस्कार सर. नमस्कार मैडम. नमस्कार जी, मैं दिलहरण सारथी जिला कोरबा छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ सर. बोलिए. मेरे यहाँ ACCL अधिग्रहण का प्रक्रिया 2009-10 से प्रारंभ हुआ है, ACCL कुसमुंडा नाम से, और अभी तक हमें न तो कोल माइंस है और ना ही हमें बराबर मुआवजा दिया गया, ना ही हमें विस्थापित किया गया, लेकिन हमारे गांव के किनारे ले आया गया खदान को, और उस खदान में इतना हाई प्रेशर ब्लास्टिंग होता है जिससे हमारे घर में दरारें आ रही हैं, हमारी छत में होल हो रहे हैं. हम लोग जब भी उनके साथ बात करते हैं तो उनका कहना ये है सर कि हम कोल बेरिंग एक्ट के अंतर्गत आपका जमीन का अधिग्रहण किए हैं, और चूंकि कोरबा जिला 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है, इसलिए पैसा एक्ट भी एक एक्ट सुनने को आता है और उसका भी पालन होना चाहिए था, हम लोग समझते हैं. लेकिन ACCL प्रबंधन का कहना है कि हम कोल बेरिंग एक्ट के तहत ही आपका जमीन अधिग्रहण किए हैं, इसलिए यहाँ पैसा एक्ट प्रभावी नहीं है. ऐसा हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि ये कोल बेरिंग एक्ट और पैसा एक्ट अपने अपनी जगह पर प्रभावी तो होना चाहिए. अब हम कहाँ खड़े हैं, हम कहाँ जाएं, यही मेरा जिज्ञासा था आप लोगों से जुड़ने का. सुनिए, सर से मैं पहले मिल चुका हूँ. सारथी जी. जी सर. कि गांव में कितने लोग हैं? गांव में एक पंचायत है सर. ये कितने लोग हैं? 800-900 लोगों का घर है. ये 900 लोगों पे गांव के ब्रिंक पे, यानी कि गांव के बॉर्डर पे ये कोल माइन का एक्टिविटीज आ गया है क्या? जी 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 हाँ, 13-14 मीटर पर आ गया है सर. अच्छा, और आप लोग को अभी तक विस्थापित यानी कि कहीं भी रिहेबिलिटेट नहीं किया गया? नहीं किया है सर, कहीं भी नहीं दिखाया. उसके पास जमीन भी नहीं है एक्चुअली में. तो वो बोलते क्या है? वो बोल रहे हैं कि आप लोग छोड़ के चले जाओ, ऐसा बोल रहे हैं? जी जी जी, वो लोग रात को भी आ जाते हैं. स्वयं वो प्रबंधन का जो जनरल मैनेजर है वो भी आ जाता है, और जो बहुत करीब में जो मकान है
जैसे वो एकदम 14-15 मीटर में जो मकान है उसमें का वो 70-75 घर को एक डेंजर जोन बना लिया है। इसको इतना को तो आप छोड़ दीजिए, इसको हटा दीजिए, ऐसा उनका मंशा है। सारथी जी, जी जी सर। पास मोबाइल कैमरा होगा, आप लोगों ने कोई वीडियो बनाया इन सब चीजों का? वो जो मकान जो छत होल हुआ है उसका बना है सर। और आप एक सुनिए, आप एक अपने पूरे गांव का वीडियो बनाइए, कम से कम 5 मिनट का। जी। उसमें वीडियो में बना के आप पूरा नरेट करिए और दिखाइए कि कहाँ से ब्लास्टिंग लास्ट हो रही है। पहले आप एविडेंस खड़ा करिए, नहीं तो आप तो कहीं के नहीं रह जाओगे। आपको पहले एविडेंस, ये आपका घर है। अच्छा, वो जो गांव है वो पंचायत है, तो वहां पर आप लोग का वोटिंग लिस्ट और ये सब तो होगा आपका? जी हाँ सर, हाँ हम लोग सब लोग सारी चीजें हैं आपको। और आपको खाली ये बोलते हैं कि पैसा एक्ट नहीं लागू होगा बिकॉज दे हैव टेकन ये एक्विजिशन अंडर कोल बियरिंग एक्ट, इसलिए बोल रहे हैं कि आप काम नहीं करेंगे, यही बोल रहे हैं ना? जी हाँ सर। तो आप लोग अभी तक, ये कब से हो रहा है ऐसा आपके साथ? ये 2009-10 से ये लोग प्रारंभ किए हैं, लेकिन पैसा ये किसी किसी को बुला के कुछ एजेंट बना लेते हैं, उनको 2017 से बुला के चुपके देना शुरू कर दिए हैं। अभी थोड़ा सा मैं एक्टिविटी किया हूँ पटेल सर से मुलाकात करने के बाद में, तो ये कुछ लोगों को नौकरी भी देना चालू कर दिए है। नौकरी जैसे 300 एकड़ जमीन हम लोगों की जा रही है। उनमें से जिन लोगों को नौकरी देना चाह रहे हैं, जिनको बुला के पैसा दिए हैं, वो लोग आपके साथ हैं कि अब आपसे बात करना बंद कर दिए? अभी वो बात तो करते हैं, लेकिन अब वो रोजगार बड़ा महत्व का चीज है, इसलिए थोड़ा सा वो लोग रोजगार के पीछे चले जा रहे हैं। और अच्छा, इस बीच में आपने 2017 बताया, फिर 2009 बताया, इस बीच आपने कोई कोर्ट में कोई पिटीशन या कहीं कुछ भी कोई लिटिगेशन डाला क्या आपने? कुछ लोग गए हैं सर, कुछ लोग 2017 में गए हैं, तो 30-40 लोग गए हैं, लेकिन अभी तक उसका बिलासपुर हाईकोर्ट में, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट बिलासपुर में है। गए, उसमें क्या हुआ? उसमें आप लोग क्यों नहीं गए? आप लोग क्यों नहीं गए? हम लोग एक्चुअली में बातचीत के जरिए ही निपट जाएगा सोच के हम लोग नहीं गए हैं, और अभी तक उनका कोई रिजल्ट भी आया नहीं है। और जो लेके गया वो एसीसीएल के साथ मिल गया सर, तो वो भी आज अधर में लटक गए हैं जो गए हैं वो लोग। देखिए, आपका ये मुद्दा बातचीत से खत्म नहीं होगा। अगर आप सही बोल रहे हैं तो, अगर आपकी बात को हम मान लें कि आप सही बोल रहे हैं, तो आपका मुद्दा बातचीत से खत्म नहीं होगा, आपको पिटीशन फाइल करना पड़ेगा। और आप सारे लोग जितने भी हैं, पटेल साहब से मिलिए, कोऑर्डिनेट करिए छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में कोई ऐसा वकील ढूंढिए जो आपके लिए खड़ा रहे, और आप लोग एक पिटीशन फाइल कीजिए। आप लोग को रिहेबिलिटेशन भी मिलेगा, रीसेटलमेंट भी मिलेगा, कंपनसेशन भी मिलेगा। इस तरह से कोई भी गवर्नमेंट की स्कीम, आप लोग कितने साल से रह रहे हैं, आपके फैमिली के लोग वहां पे? ये तो कई पीढ़ी से है सर यहाँ पर, कोई भी तो इस तरह से गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम, छोड़ दीजिए एक्विजिशन अंडर कोल बियरिंग एक्ट, वो सब सारी बातें पीछे छोड़ दीजिए। कहीं भी इस तरह से मुंबई जैसे शहर में लोग इंक्रोचमेंट करके आ जाते हैं, उनको रीसेटल किया जाता है, उनको रिहेबिलिटेट किया जाता है। और ये मुंबई नहीं, गुजरात में और देश के कई जगह पे रेलवे के लाइन पे लोग आके इंक्रोच कर लेते हैं, उनको रिहेबिलिटेट किया जाता है। यहाँ तो आपका पुश्तैनी घर है, ये कहीं भी बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लॉ में मेरे को डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। आपको न्याय पक्का मिलेगा, ठीक से लड़िए आपको। और इसके लिए जरा प्रवीण पटेल साहब से बात कीजिए, और आप लोग भी पिटीशन लेके जाइए हाईकोर्ट में। प्रवीण सर। यस सर। इन लोग का काम सर बिना हाईकोर्ट जाए नहीं होगा। यस You all have to proper petition. You have to guide him. I'm also ready to guide them and appoint some good person. The problem is that, I mean, the sustained fight is required. Yes, sir. The fight should be steady, continuous and sustained. Problem वही होती है कि लोग बीच में चेन ब्रेक हो जाता है, या हमको गलत लोग मिल जाते हैं, हमारी फाइट सस्टेन्ड नहीं हो पाती। नहीं तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है, and I believe it can be raised, but forget about I'm a lawyer, I have to give legal advice. It is better to file a writ petition in High Court, and I'm sure they are going to get the relief. Definitely, sir, करेंगे। और ये जो बात किया इन्होंने सर,
तो उसमें क्या है, गांव में डिवाइड एंड रूल वाले प्रैक्टिस कर रहे हैं कि लोगों के बीच में डिवीजन करना, कुछ लोगों को लालच दे देना, जैसे नौकरी की बात की है और सब। तो हमारे तो काफी एक्सपीरियंस है, मैं उसमें अभी नहीं जाऊंगा टू सेव द टाइम, बट हिंडाल्को का जो है एक एग्जांपल दे रहा हूँ। उन्होंने इस प्रकार लोगों की जमीन एक्वायर की है, आदिवासियों की, उनको बोला नौकरी देंगे, और नौकरी कहाँ दी है, ट्रक के अंदर हेल्पर बनाया, और उस ट्रक कॉन्ट्रैक्टर ने कुछ दिन के बाद उनको भगा दिया जब उनका काम पूरा हो गया। तो ऐसे बहुत सारे घटना आती है सामने कि जहाँ इन लोग अनऑर्गेनाइज्ड जो लोग हैं उनको इस प्रकार चीटिंग करते हैं, धोखा देते हैं, और उनकी जमीन लेने के बाद में उनको जानवर जैसा उनसे व्यवहार करते हैं। इनके ग्राम पंचायत जो है ना, ग्राम पंचायत का अभी कौन है, हेड कौन है सारथी जी? यहाँ पर ट्राइबल है तो एक महिला है, कमला बाई सरपंच है। वो आपके साथ है कि वो आपके अगेंस्ट में है? अब वो भी अभी उसके भी बच्चों को, उनका जो गांव है मेरे बगल गांव, अधीनस्थ गांव है सर, तो वो 94-92 में अधिग्रहण हुआ था उनका गांव। तो अभी तक उनको भी रोजगार नहीं मिला है। अभी वो भी परसों खदान में जाके बैठी थी, आज उनका न्यूज़पेपर छपा है, वो भी परेशान है। लेकिन अब साहब पूछे हैं वो आपके साथ है या नहीं है? जी जी, अभी फिलहाल नहीं है वो, अभी हम लोगों के गांव के लिए, उनके बगल गांव की है, तब वो इसलिए हमारे गांव के लिए उतना सपोर्ट नहीं करती हो। आप लोग अपना पिटीशन डायरेक्ट लेके जाइए हाई कोर्ट में। जी जी ठीक है सर, मैं गाइड we'll कर do the दूंगा। needful, sir. मैं गाइड कर दूंगा। Sure, sir. थैंक यू। नमस्कार सर। पूजा, over to you. Thank you so much, sir. I now request Mansi to please unmute herself and pose the question. Mansi. Yes. Hello, sir. Hello. Thank you for being to do this. This is really great that you're doing. So my question is just that for many homeowners who lack the required paperwork or do not have to stamp duty on the house. आपकी आवाज नहीं आ रही है शायद ठीक से। आपकी आवाज बराबर क्लियर नहीं है। Your voice is very blur. Now can you hear me? Please carry on. Please speak slowly, then probably we'll hear you. For many homeowners who lack the required paperwork or who haven't paid the stamp duty when they have purchased the house, what is the legal help that's available for them to sell the properties? Because how can they address such issues? Because for homes that have been bought over 30 years, over 40 years ago, it's really ridiculous to pay like 5 lakhs, 6 lakhs as like fine if they want to sell the house. Please repeat once again your question. Slowly, slowly. Aram se. For many homeowners who lack the required paperwork or do not have paid stamp duties on their house when they had purchased it, what are the legal options which are available to help them sell their properties? How can these homeowners address these issues while ensuring compliance with the legal regulations? It is which state? Which state? Maharashtra. Maharashtra. You are advocate? Are you lawyer? Trainee No, lawyer? I'm a law student. I'm a law student. Law student. In which year you are? I'm in second year. Second year. Just Google. I'm giving you a job. Do it yourself. Just Google. Google is giving everything. Type amnesty scheme for payment of arrear of stamp duty in Maharashtra. Amnesty scheme, just put, you will get it. Okay. Lots of amnesty schemes are there. Recently, I'm aware personally that last year there was amnesty scheme. Otherwise, as per the law, if they will go to sell their property or hand over this document, the document of this property where they have not paid the stamp duty would be impounded by, and after impounding, the same heavy penalty would be imposed upon them. Forget about right to sell, etc. Yes. So first find out what are the number of the people. In any case, they have to pay the stamp duty, or in any case, they have to pay if there is no continuing amnesty scheme is going on, then they have to pay the heavy amount of penalty also. Yes. So looking into that, they have to take a call. It is here
It is their pocket has to permit them. It is they have to take a call. I don't know whether property is value of 5 lakhs or 5 crore. I'm not concerned with that. So that everything is to be judged by themselves. Because if I consider 5 lakhs of property, then I'll say forget about it. If I consider I'm going to fetch after the sale 10 crore rupees of my property, then probably I'll do my efforts. So here I'm not entering into that bracket. I'm giving a general advice because you put a general question to me. Yes. Right? But yes, the document would be impounded. The penalty would be required to be paid. A certain amount of penalty, stamp duty, and the arrears, then interest, lots of schemes are there. They will put heavy amount. So solution is only the payment to the exchequer. Let me be very honest to you. There is no shortcut. No writ will be entertained by the High Court. Even you will go to any court, court will say, if document is impounded or not impounded, first pay the stamp arrears of stamp duty. Only then your document would be valid, the transfer would be valid. Yes. And after that, then other issues are there, which are related to, because that is related to whether property is in municipal corporation, whether property is in panchayat. So all these questions are there, which I am not touching upon. Okay. Because why I should touch upon when you have not asked me? Correct? Yes. All the best. Thank you, sir. I now request Mukund Raj to kindly pose your question. Mukund Raj. Mukund, you are in the meeting. Are you able to unmute? Shift to next one. Okay, sir. Seems absent. Move on to the next question by Anas. Hello, sir. Yeah. Good evening, sir. Am I audible? Yeah, you're audible. Go ahead. Carry on, please carry on. Recently, regarding the LGBTQ community, उन लोग ने petition file किया था Supreme Court में for granting the right to marriage. Now, so my question is, whether judiciary has the power to interpret the word marriage to such an extent, because legislature intent कभी था ही नहीं कि marriage should be between same sex. It was always heterosexual marriage. So is there a relief that judiciary can provide, or is the LGBT community approaching the wrong wing of the government? Mister, I'm just asking you one question. Here we are not sitting. You are a law student? Yes, sir. Yes, that's why these kind of questions, and very valid. I'm happy to hear all these kind of questions. Because, Mr. Ram Jethmalani once told that, and he was having a practice. Every Saturday, he used to go and take some lecture in some college. He was having this practice. And once I accompany also him in some lecture. I asked her, what is the reason behind? He said that we are very matured and so-called knowledgeable mind. So we don't experiment. We are so informed that we stop experimenting. We become judgmental. And with the people like you, young mind, who have less knowledge of law or less knowledge of understanding, they keep innovative ideas having in their mind, and they keep experimenting. But that helps to the lawyer like us that, yes, this could be also a question. So you have helped me to pose a question to me that whether judiciary has power to decide. This is your question in Supreme Court. So my two-line answer would be, first, here we are not sitting to comment upon the power of the judiciary, number one. Now I have to answer you, I'm answering you. So we are not here sitting to comment upon the power of the judiciary, number one in general. But yes, not only that, but the Supreme Court has every power to take a call and to decide, because Supreme Court is the guardian of the Constitution. So both questions, you pose me one question, I'm answering you. I've given you two answers. Fine.
Sir, can I ask a follow-up? Tell me. So the argument is Article 15, discrimination on the basis of sex. But the question is, sex is biological. One is either male or female. And what we're fighting for is gender. Where, for example, where I feel perhaps I feel belonging, attracted to some other gender and not other sex. So can that be feasible? Where we argue that Article 15, where the on it should be based on gender discrimination, or perhaps it is strictly limited to that. I'm sorry. I told you these are the issues what you are raising on the basis of referring to Article 15 of the Constitution of India. Can I tell you these all issues? We are nobody to decide. Are we discussing something? We are not discussing something. You are posing a question to me. Yes, if it would have been a group discussion, it would have been a discussion or some debate. You are asking me a question. It is not a question, my dear. The matter is subjected before Supreme Court. Let court decide whether court has power to decide or not. The point of view, what you are trying to set forth. Let court, it is better file an intervention application and stand and pose these all questions to Supreme Court. You have a very good judge. So who can answer you, and probably the Honorable Court will appreciate you also. So I believe referring to certain issues like Article 15, and then I am attracted to opposite sex or gender, whatever it is, gender centric. I mean, all these questions are very subjective questions, which requires discussion. We are not here discussing, my dear. Okay, Mr. Anas? Thank you. But I really appreciate your question, because I could not, that's why I smile that I'm being asked that whether judiciary has power or not. That was a brilliant question to me. Thank you anyways, thank you. And keep putting such questions. All students must keep putting such questions. That is good. That gives a thought to us. Thank you. Thank you, sir. So before moving forward, I would like to ask if you would be able to continue with the session, as you are a bit unwell. So if not, then we can continue it in the next session. We'll continue next time, if you don't mind. Sure, sir. No problem. Thank you. With this, we come to the end of the session, and I would like to thank each and every one of you for joining in. And I would like to thank Mr. Anjani Kumar Singh, sir, to contribute your time and efforts towards this cause, despite not being in the pink of health. So thank you so much. I hope you get well. Thank you. Thanks, sir. Thank you, Praveen bhai. Thank you, sir. Please get well soon. We'll let our prayers are for you, and hope compared to last Saturday, this Saturday I tried to manage in a way. I really liked it. I really salute you for that. Thank you. No, not only that, I will be involving every week. Praveen and myself, we have been coordinating. Every week, a new face will be moderating who are law students. So they get a experience of a senior most lawyer and audience and the problems and all. And if you have any other suggestion, we are open to it. No. I'm really very happy for today's session. It was very precise, to the point, and focused. We should maintain that. Yeah. Thank you. So in future, what we plan to do is, if it is 1.5 hours, 1 hour will be a fresh question, and the last half an hour will be a supplementary question based on the previous answers what you have already given. Very good. So that new questions are taken up every week. Very good. I hope you are in concurrence. I'm really enjoying it. I'm enjoying it. Oh, thank you so much. One suggestion, sir. Yeah. Sir. Yeah, Praveen. Yeah, sir है? Yeah, please, I'm there. Yeah. तो अभी जो एनकाउंटर किलिंग्स जो हुई है और जो उसका क्रेज बढ़ते जा रहा है, बुलडोजिंग, एनकाउंटर किलिंग एंड ऑल देयर थिंग्स, तो व्हाट स्टैंड वी कैन टेक इन दिस वन? This is complete lawlessness. Sir, criminal है. We don't mind.
कि आप उसको कोर्ट में ले जा रहे हैं, प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज हो रही है, तो it is the role of the police is also there. Very true, sir. Sir. Actually, on this issue, lots of guidelines are already there. Like there is a 16-point guidelines of Supreme Court is there. Even Human Rights Commission is also there. Even the order of magistrate inquiry is a matter of practice that in any encounter FIR has to be registered. Order of magistrate inquiry report is to be submitted. And this is all practices there. So I told you last time also, and again I'm repeating. Yes, sir. Our judiciary is not having its own police. Our judiciary has to get any job done from the executives. So the executives have their, prerogative or have their right ego or liberty. Let us not ego. Let us ego is I'm a lawyer, so I'll be always. They have their own rights, liberty, or whatever it is. They may go beyond that. They may misuse that. Even for that, also law is there. Law is there to punish them if they go beyond their duty. Yes, sir. So law is there. The fairness is required. And probably that's why court is there. Even if we are not satisfied that whatever the guidelines are there of Supreme Court, whatever the rules are being followed as of now about the encounter killing, alleged encounter killing, if it is not complete, prepare certain ideas, come with ideas, file a fresh petition, PIL in Supreme Court, let the few more guidelines come. For that purposes, you have to minutely ascertain and you have to engage into the factual aspect that where you find lots of loopholes are there and which you can plug in, by way of seeking guidelines from Honorable Supreme Court. Yes, sir. So for that, even your team has to work, minutely observe in the newspaper, in the television, what are the loopholes where you can try to plug in by filing certain PILs, by seeking certain guidelines from the Honorable Supreme Court of India. That can be done. But it all requires lots of effort. Otherwise, we'll discuss this thing in future, sir. This is not a very easy thing. Already things are there. And there is the things are there, law is there, every procedure is there, but still mishaps are there. So whether it is mishap, whether it is intentional, whether it is accidental, whether it is a correct encounter, every aspect you have to ascertain. And if you find loopholes, then again you can go to Supreme Court seeking further guidelines. We'll discuss in a separate webinar, sir, on this issue. Inviting few more guests. I think recently one petition was filed into Supreme Court about curtailing these activities of bulldozer, but it was rejected, I think. We will just study this thing and have a webinar exclusively on this one before taking a position. Patel ji and Anjani Kumar ji. Yes. Vote of thanks kar dijiye, sir. No, not vote of, like it was quite painful to hear some of the cases like the coal mine and other things. Well, they are poor families. My submission is, if there are some incidental expenses which you have to take care to file the petition or whatever, the court fees and other things, I'll be too happy to volunteer the expenses. Yes. So let money did not become the impediment for a noble cause. And Patel, you feel free to approach me. I will donate the thing, like whatever may be the expenses. I'll be too happy to do it. No, for this people, even if you want my legal help, the petition I can settle. If with local lawyer, I can finalize the petition. Yeah. If you all will do the needful, sir. Any incidental expenses like you have to travel somewhere or filing the court fees or some sort of thing, you can approach me. I'll be happy to donate. Okay, or contribute. Okay. Yeah. So the things move forward. Okay. No problem, and sir. Lastly, I think the villagers will take care. No problem. Yeah, please. We will have to find a good lawyer who cannot be sold out. That is the important thing. No, one thing is most important thing is that because the other parties, opposite party, that is the coalfield people, etc., they can easily manage people. So compared to last week, this week we have moved on in a much better way.
And let me guarantee you, as we move forward, you will find it one of the best webinars. Okay, that I can guarantee you. And it will be more interesting and lively. I look at it as a multi-fold activity. Like the students also get to learn. See, birds, I don't have any issue, but I get to learn so many legal things, so many issues. So that way also it serves, and the end user also is benefited. At least now, one thing I can say, today, you being so unwell, yet you came. This is something great. I have no words to say. Anjani ji, yet you have been kind enough to be here. I have, however much I say, it will be less. And still you managed to answer all the questions. And it turned out to be very interesting. And I must compliment Pooja. She did an excellent job, right from the start to finish. Looking at your age, I could not open the mouth. Today, you are a confident person. Let me compliment you for doing it. And Chavda ji is going to assist us in the future webinar. Dr. Chavda will be coming out with lot many issues from the area. I'm looking at a multi-various activity like something related to women, something to child, something. So each of the webinar will be touching on different aspects of the whole thing. So it is not just confined to one topic. As we evolve, I guarantee that it will be made much more interesting, more useful, and a common man is served. And Anjani Kumarji, thank you once again very much. And last but not least, the main man behind the show, Praveen Patel, who had taken the lead, who is the one who coordinated the whole thing. And Praveen Patel, thank you so much in spite of the thing. And you have got a lot of other work to do. And yes, you managed it. And all the other participants, of course, for taking your time and being here. And please spread the message across. I request the other participants come out with a meaningful problems, not a irrelevant problem, but a meaningful something quite useful. And post the question, send it by email to Federation email address. So the committee will review the whole thing and forward it to the advocate in advance so that you get very much more detailed answer. Rather than at the last minute to pose a question, I think it will become job made more easy and also more questions we can tackle. Once again, thanks all the questioners for putting across the question, and I hope they are satisfied. Yeah, let them approach the local legal department or whatever it is. If they have a supplementary question based on today's advice, again send it back to Federation and we will revert back to you. We will try to be as much helpful as possible to all the members of society at large. Once again, thank you. Take care of your health. Wish you speedy recovery. Thank you very much for being present here. Thank you all. Thank you. Thank you all. Thank you. Thank you. Pooja, you did a good job. Thank you so much, sir. Yeah, you did a very good job. And especially request to all the participants that kindly draw the attention to different questions from your region, especially. Yeah. Because quality questions would really make the webinars very fruitful. Yeah. So all the participants across the country until come with their quality questions, really touching to the public grievances, will not be able to touch the right nerve of the society. That so, is. You come out with ideas, Chavda. That's why, like that, you are the main backbone here. See, today, amongst the legal thing in the committee, you are the senior most. No, sir. You have to guide us better. No. And I know you well, yeah. You are very competent. No. You can guide all we are for some social cause. Definitely, we devote some time for the society. It would be really very grateful that when we close our eyes, at least we should not be feeling ashamed to look into the mirror. That yes, we are not something to the society, right? Some contribution also has to be done to the society. I don't think any other organization must have done a webinar like this. But Chavda ji, how did you find it? That was great. We'll make it improve. Basically, today is the first webinar. Yeah. Last webinar was just get to know and other thing and all. Informing the people what we plan to do. For being the first webinar, I think that it went off very well. And in the future, Venkatji, we can do some other things also. Like suppose we have 5 questions concerned with the property. Yeah. We can invite some lawyer concerned with the property especially. Because see,
law is a very vast. It's a sea. That we'll take it up because today, Saturday, it's the evening with Anjani Kumar. That will remember. That is great. That is great. He is a competent one. Further, as we progress further, perhaps we can invite specific to that department, like property or some sort of thing and all. Maybe on some other days, maybe once a month, like that and all. So that all, you come out with ideas, and our great person, Praveen Patel, is there. You know how he is. He can organize 100 webinars in one stroke here. And I have full confidence in Praveen Patel. He can do wonders here. He can do it. And today's webinar was also thanks to only Praveen. He is the one who coordinated with the PCGT and all the things. So I'm sure that, because basically, as I told Praveen, I want to see that more and more people are benefited. I want a different galaxy of people, because normally in the webinar we find the same faces every week. Today I want to see different faces. Every week, the 40 different faces with their problems. So we reach out to the masses. That's what the goal. And for a beginning, today, I'm quite glad. I'm quite happy with what has happened today. Unfortunately, Anjani Kumar, despite his poor health, still he did it. I'll tell you, hats off to him. Yeah, that's it. So, Praveen, I think you have the last say. No, let us make it over today and convey thanks to everybody. How did you? I am facing some technical problem. The camera is not working. No, so I am using my computer as well as mobile. And anyhow, I am continuing. Then how did you find today's webinar? Good. It was good. It was good. No doubt. I'm quite happy. I'm quite happy. Yeah, good. But one thing, some of the issues what I heard was very painful, very hurtful. See, the case of Mr. Bandana Topo from Odisha is a clear case of police playing mischief to save the skin of the DSP. Here in this case of Korba, when we are talking about 5th schedule area, here the high-handedness of the coalfield people, they are playing with mischief with the villagers. No, I want to. No, they think what they think. They think that these poor people, where they will go. But what is the reason behind that murder? Was there a murder? I think that must be a love triangle. Love triangle. Because the Biren Lakra, the hockey player, was designated to be the captain of the Indian team. He and the son of Mr. Bandana Topo, they were childhood friends. Oh. So they were very good friends, and they half of the days the Biren Lakra used to stay in this Bandana Topo's family. Oh. So much close relation was there. And after the marriage of the son who has been murdered, this thing has happened. And there was a girl actually who was there in the Bhubaneswar, in the hostel, when his son is. I am also confident that he must have been hanged together by Biren as well as that lady. This is my suspicion. No. What is the wife's comment on this? The son's, the Bahu ka comment किया है इसमें about the death. अभी बात करूंगा तो पता चलेगा. Family matters में हम नहीं गए हैं. Or was that hockey player? Was he a Casanova? Was he in the? We'll talk to the Bandana Topo again and we'll come back. But any help, financial help, I'll help you because very poor families. Okay, I have no problem. Okay. No problem. Anyway, anyway, Dr. Chawda, thanks for being here and thanks, sir. Thanks all. Very well. And Pooja, you plan for the next week. Now the job rests with you. Get more questions. Now, for future webinars, today I'm impressed. I want you to be the trainer for the others. Already you have been appointed as a trainer for the future webinar. Okay. In case of anything happening, you immediately back up and motivate them. Shivam is there? I think Shivam. Shivam is not logged in. I think he was busy. Shivam? No, he wanted. He was there, but I think he has left. Yes. Okay. Venkatji, make one group of Praveen Bhai, you, me, and Shivam, so that we can just have a mutual discussion for the next course of actions and everything. I think Praveen, somewhere on Tuesday, Wednesday, or Monday. That Shivam has taken the responsibility. Now Chawda ji, senior most member, has joined us. I think
next अरे सर, you and Praveen bhai is the अरे same मैं boss. आपको मिला हूँ, I am not, sir. अरे अगर मैं अभी तो I recently met you, I know your capability. I'm quite glad here. So anyway, yeah. Call next Saturday. Look forward to the meeting you. Thank you so much. See you guys Okay, hopefully thank next you. Saturday. Yeah. Yeah, and bye to everybody. Bye all. Bye. नमस्कार नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्ते भाई हरेन भाई। जी नमस्कार सर। क्या बात, अभी आपका आवाज सुन रहा है? नहीं सर, बहुत मन से सुन रहे थे हम, और मुझे गर्व हुआ कि मैं इस ग्रुप में हूँ। मुझे बहुत गर्व हुआ सर। देखिए उधर जो भी लोगों की समस्या हो, कुछ भी हो। आगे विनोद जी भी है। विनोद जी का कुछ सप्लीमेंट्री क्वेश्चन होगा, लेट हिम सेंड इट टू यू एंड वी कैन रेज इट इन फ्यूचर। विनोद जी आज वो जो सुझाव दिया है, बेस्ड ऑन विच आगे कुछ और भी एडवाइस लेना है, यू फील फ्री टू कॉन्टेक्ट इट सर, नो प्रॉब्लम। ओके, अंजनी कुमार विल बी विद अस एवरी सैटरडे। ओके, मेन थिंग द प्रॉब्लम हैज टू बी रिजॉल्व्ड, दैट इज आवर अल्टीमेट गोल। या ये उड़ीसा के साबित जी हैं क्या? सुधीर जी? सुधीर जी है या चले गए? कर्जा दे जनरल में सब सगे नहीं। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब हैं? जी कि बहुत अच्छा लगा सर ये प्रोग्राम, और मुझे तो गर्व हुआ कि इतना अच्छा वेबिनार भी संभव हो सकता है और इतना फ्रूटफुल हो सकता है। ये उम्मीद मुझे नहीं थी जो आज किया गया। मुझे बहुत अच्छा लगा सर। आगे इससे अच्छा करेंगे तो सब होगा। हाँ जरूर सर, जरूर सर। हम लोग सब प्रयासरत हैं सर, अपने अवसर से सब कोई कोशिश कर रहे हैं कि बेहतर हो, बेहतर से बेहतर हो। हम सब कोई लगे हुए हैं सर। हरेंद्र, आगे का वेबिनार के लिए आप तुरंत किस किस का समस्या हो, तुरंत आप ईमेल भेज दीजिए, तो हम कर सकते हैं, तो आपका सोसाइटी और स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है सर। ये मैसेज आप फॉरवर्ड कर दीजिए मैक्सिमम पीपल, क्योंकि इतना सीनियर मोस्ट एडवोकेट हर शनिवार 2 घंटा समय निकालना मैं पहले बार मेरे जिंदगी में सुन रहा हूँ। ठीक है, तो बट लेट अस यूटिलाइज इट and make it more interesting, and future also let us see that. Okay. So anyway, thank you so much. Have a nice weekend. Enjoy your Sunday. Okay then. Bye everybody. Okay sir. Bye. Bye Anas. Yeah, bye. All of you. प्रणाम सर, प्रणाम सर, प्रणाम। Pooja, please end the meeting. Yes, sure.